पिछले दिनी कई खबर आईਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सिर्फ सज़ा ही नहीं जुर्माना भी लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा? 50,000 तो लैके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो जे गंभीर मामला होया तो इस जुर्माने की रकम होर बढ़ जाएगी। ये 1 लाख तो लैके 5 लाख रुपए तक हो जाएगी। अज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिस दे विच फैसला लिया गया तो सरकार ने फैसले संबंधी ऑर्डीनेंस जारी कर दिता है तो नाल ही MHA वालों सारे सूबे को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि सख्ती नाल इस कानून को लागू किया जाए। तो सेहत कर्मियों की सुरक्षा नाल हुण कोई जिहड़ा है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होएगा, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा तो अजिहे लोगों की हुण खैर नहीं होएगी, सज़ा होएगी उन्होंने तो बकायदा जुर्माना भी उन्होंने उत्ते लगाया जाएगा। Today cabinet met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to ASHA workers. Everybody get protected because what we have seen when they are doing a yeoman's job, when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked. And some places their property is damaged. And at many places they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government it's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society, and therefore the ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come, and the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years and fines start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees.